Successful communication, proper communication is that where you think, you feel, and you speak the same, and the person you are speaking to also understands it in a same manner. Otherwise, most probably what happens is I feel something, I think something, I speak something, I'm understood in another way, and then I keep on going, no, 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 I never wanted to hurt you. Sorry, 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 sorry. I don't want to say that. Oh, no, this word. No, 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 no. I never wanted this. If you really want to avoid this confusion, your communication should be proper. May it be any language. हम हिंदी में बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं या और किसी भाषा में बोल रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग कब होगा? कि जब हम जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं और सामने वाला जो समझ रहा है, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो हमको कम्युनिकेशन हमारा सही करना है। अब हमको कम्युनिकेशन सही करना है और वो भी इंग्लिश में करना है। अवर एम इज अ स्टेप अहेड। तो अभी हमको क्या करना है? इंग्लिश में कम्युनिकेशन हमारा सही करना है। तो वी विल बी डिस्क्राइबिंग सम सिचुएशंस ऑल्सो। अब जैसे भी क्लास में कुछ गड़बड़ होगा, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि बताइए अभी क्या हुआ इंग्लिश में, धीरे धीरे।